Good afternoon, sir. How are you? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. How are you? I'm good, Chi. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone.
ये तो कह रहा है कि हमने लीव डाली है कॉल के बिल नहीं है। आंसू के मरज को तो अब सिर्फ इंसानियत का सहारा है। आओ बांट ले ये दर्द, क्योंकि यह जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है, उतना ही हमारा है। एक साफ दिल की चमक न होती हीरे से कम है। जब एक से दो मिल जाए तो फिर मुट्ठी में दम है। एक साफ दिल की चमक न होती हीरे से कम है। जब एक से दो मिल जाए तो फिर मुट्ठी में दम है।
भावना वो सच्चाई बन गई। इन हीरो की चमक से ही हमें देश सजाना है। अब दिखलाएंगे उन्हें जो कहते पूरा जमाना है। कौन कहता है इंसानियत अभी जिंदा नहीं? कैद से क्यों नहीं छूट सकता परिंदा कोई? जरा नजर उठा के देख ले, अल्लाह हर इंसान में तेरे लिए खड़ा है। इस लहर को हमें मिलकर सारी दुनिया में अब फैलाना है। मान लो बात सच में यही के भलाई का अब तो जमाना है। मान लो बात सच में यही भलाई का अब तो जमाना है। मान लो बात सच में यही भलाई का अब तो जमाना है। आंसुओं के मरज को तो अब सिर्फ इंसानियत का सहारा है। आओ बांट ले ये दर्द, क्योंकि यह जितना तुम्हारा है Today we are showcasing different art and craft products, all made by young children, part of Veda Tiyadi, and they have made it all on their own, all their own talents. They are showcasing today with the help of CityNeeds and the NGO Carnival. Very good evening to all of you. Okay, you are on mute. Sorry. All set to go. I'm really excited to see so many young students from different institutions. And I hope we have a few teachers also from some institutions who had registered for the program. Are there any teachers here
from any institution, please just chat. I can see some names, but anyway. Yeah, hi Rahul sir, good evening, very good evening. Then we have from Good Khalsa evening, College sir. for Women also, she's joining. Great. So let's guys start the session. और हमने स्टार्टिंग में जो आपको एक मैसेज भेजा था उसमें कुछ रूल्स थे, इफ यू रिमेम्बर, और वही रूल्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे भी दोबारा एक्सप्लेन किए हैं. एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप उसको फॉलो करें तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज सोशल मीडिया को यूज करने के या एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को यूज करने के कुछ बेसिक रूल्स हैं. गुड इवनिंग पूजा मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. ग्रेट. सो वो रूल्स में सबसे पहले तो ये आता है कि जब हम 1-to-1 बात कर रहे हो तो वी मस्ट स्विच ऑन आवर कैमरास, बिकॉज इफ वी आर नॉट एबल टू सी ईच अदर देन वो बात मीटिंग का मजा नहीं आता, ऐसे लगता है कि टेलीफोन कॉल चल रही है. So let's start using the techniques which are available with us. Now we have a session where today we will be talking about CityNeeds. CityNeeds का platform है क्या, हम करते क्या हैं, what is Campus Reporter and what you all are going to get out of it, और आपके जो institutions हैं वो कैसे इसमें involve होंगे. This is a revolutionary platform which is doing wonders in the last 1.5 years, and now we are scaling to different heights. So once again, welcome all of you, and I'll start with the basic presentation, क्योंकि इसमें मेरी वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि हमें उस टॉपिक को समझना जिसके लिए आप सब यहाँ पे आए हो. So I think everyone has introduced themselves because आपकी attendance तो लगी रही है, and the certificates will be given only to those participants जो हमारे सारे के सारे 8 सेशंस जो आपने पे किए हैं, फीस पे की है, उसको अगर आप अटेंड करते हो, देन फाइनल 8th सेशन जो है हमारा वो एक पिकनिक है जो कि मोस्ट लाइकली हम रोज गार्डन में करेंगे. इट विल बी इंटरैक्टिव काइंड ऑफ थिंग, और सारे सर्टिफिकेट भी जो हैं वो वहीं पे दिए जाएंगे. नाउ स्टार्टिंग विद द प्रेजेंटेशन. So all of you, can you see my screen? Can you see the presentation? Okay, Baljinder, is it visible? My presentation is visible? Yes, sir. Great, wonderful. So आज हम basically अगला कुछ समय informally आपके पास spend करेंगे telling you about what is CityNeeds, क्योंकि total 8 sessions हैं जो कि आपको शुरू के ब्रोशर में भी बताया गया था. फर्स्ट सेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट CityNeeds, कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कैसे एनजीओज को, लोकल एनजीओज को लोकल वॉलंटियर्स के साथ कनेक्ट करता है या लोकल डोनर्स के साथ कनेक्ट करता है. डोनर्स इज नॉट ओनली मॉनिटरी, इट कैन बी कोई ब्लड डोनेट कर रहा है, कोई कपड़ा डोनेट कर रहा है, कोई किताबें डोनेट कर रहा है. हम कुछ भी किसी को एक्सटेंड करते हैं, हेल्प एक्सटेंड करते हैं, तो हम चाहे अपना वॉलंटियर भी करते हैं तो हम अपना टाइम डोनेट कर रहे होते हैं. सो आज हम ज्यादातर बात करेंगे कैंपस रिपोर्टर के बजाय CityNeeds के ऊपर, और कल हम बात करेंगे बेसिकली कि व्हाट इज द कैंपस रिपोर्टर प्रोग्राम. वो समझने के लिए और आपको असाइनमेंट्स करने के लिए और प्रैक्टिकली इसका एक लॉन्ग टर्म फायदा लेने के लिए सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि एनजीओज क्या होते हैं और CityNeeds क्या करता है. कल हम बात करेंगे कि एज अ कैंपस रिपोर्टर आप क्या क्या सीखोगे, क्या क्या करोगे, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ इट इन योर करियर आल्सो. सो टुडे आई विल बी फोकसिंग ओनली ऑन दिस थिंग. एक प्रॉमिस मुझे आप सबसे चाहिए. चलिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मैंने आपको बता दिए कि आप इसी लिंक को, हाँ ध्यान रखिए कि जिस लिंक को आपने यूज किया है आज टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर सेशन, you must save that link because it is a unique link for you, and you will be joining every session through that link only, and your attendance is marked automatically through that link only. If you lose that link, we will not be able to provide you again because आपकी पिछली attendance खत्म हो जाएगी. So make sure.
Number two is please make sure that you remain indoors. There is no background disturbances. It's a serious matter that we are going to discuss in the next few days. And especially आज का बहुत ही एक sensitive matter है जो हम discuss करने जा रहे हैं. So we all need to be, quiet, serious, and with our cameras on. And last promise जो मुझे आपसे चाहिए, सबसे important promise चाहिए कि हर session के end में एक छोटा सा assignment होगा. उस assignment को complete किए बिना अगर आप अगले session में जाते हैं तो आपको मजा नहीं आएगा. There will be a serious disconnect in that. So the whole program has been designed in such a beautiful manner that whatever you listen in these 2 hours must be executed in the next 10-15 minutes also. Otherwise, if you lose track of that, you will lose the interest in the program. So the choice is yours. You have paid for it, so you must get a value out of it. Now, पहला तो मेरा सवाल आपसे ये है, सारे जो भी participants हैं, including the teachers and the students here, कि आप sad होते हो, angry होते हो और frustrate होते हो. बलजिंदर जी, can you start the poll asking for कि आप पिछले कब 7 दिनों में, 15 दिनों में या पिछले 1 महीने में when did you get angry? Baljinder, can you start the poll? Yes, sir, starting. Okay, this is a very interesting thing जो आपके सामने निकल के आएगी. We'll have a quick poll now. So have you been sad, angry, or frustrated in the last 7 days, 15 days, or 30 days? Okay. Oh my God. Okay. So you've been sad, angry, or frustrated. Oh my God, do you mean to say that 73% people are saying that this happened to them in the last 7 days? And 17% says कि पिछले 15 दिनों में हमारे साथ ये ऐसा. Oh my God. And what were the reasons? अगर आप quickly, if you remember, what were the reasons? आप sad क्यों हुए, angry क्यों हुए? कुछ give me some hints. Some reasons. मोटे तौर पे. Okay, no, you can just type because raising hands will take a lot of time. You can just type. So we have seen 73% people says पिछले 7 दिन में and 17% says पिछले 15 दिन में. So practically everyone, we have 48 votes right now, and practically everyone in this group is saying that they have been angry. Now why? My question is why? What was the reason that made you angry or sad? Okay. Exam, study, right? Dissatisfaction, job के लिए. Okay. Yes, they are all varied reasons. Very much human reasons. People of behavior, work pressure, family problems. Absolutely right. These are the problems. How will the poll be? Okay. Great. So these are all normal situations. But the point is, what I want to draw home here is something very different. एक उससे पहले मैं आपसे before I open up my cards, एक मैं आपसे और चीज पूछना चाहूंगा. एक ये पोल हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपने yes no कर. Do you take treatment in a civil hospital, in a charitable hospital, जहां पे फ्री में ट्रीटमेंट किया जाता है या कई बारी कैंप्स में होता है? Can you start the poll, Baljinder? And the second question is, do you travel
without AC in a passenger train? Can you see the poll? So the first question, okay, one by one chalte hain. Do you take treatment in a civil hospital, in a charitable hospital, without giving the money? Or you can say you don't get treatment. Okay, okay, okay. Right, right. Okay. Okay, now let me take few examples here. This is the question, does your house has more than one room? आपके घर में केवल एक कमरा है and 100% says no. दूसरा सवाल कि क्या आप 12th के बाद ड्रॉप आउट कर जाएंगे? 93% says no, not at all. Now 82% says they own a car also. Okay. Great. Now what I'm trying to bring home is, what I'm trying to tell you is, my next screen. आप जिस चीज को देख के उदास हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या एंग्री हो रहे हैं, वो सब वो चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपको परेशान कर सकती हैं. एग्जाम प्रेशर, जॉब प्रेशर, डिससेटिस्फैक्शन, ये सब कॉमन चीजें हैं जिससे कि हम नॉर्मली एंग्री होते हैं. बट नाउ लेट मी शो यू द रियल पिक्चर ऑफ द सोसाइटी. बिकॉज जो आपने अभी तक पोल्स भरे हैं उसके हिसाब से you are the 10% luckiest people on this planet. Do you know this? You are 10% of the luckiest people on this planet, because now go step by step. This is something very, very important to see. Do you know how many blind people are there in this world? Oh, sorry, in our country, not the world, in our country. 50 lakh people. That means 1 in every 200 person cannot see, but we all can see. Five million people in our country are physically challenged. We can walk, we can see, we can hear. 6 million children cannot hear. This is as per the Indian Journal of Pathology. Keep on reading the headline also. 2.4 million people, that means 24 lakh people cannot speak. I hope you all can. Autism. I hope you know what is this problem. 2 million people, 2 million children are undergoing this problem, and it is increasing very fast. 25 lakh people have cerebral palsy. This is again a very common and fast growing disease in India. And let me tell you, around 40 crore people, 40 crore means 1/3 of your country is below the poverty line. And do you know what is poverty line? It's unimaginable. The money you spend on your mobile phone, or the money you spend commuting to your institution, अगर आपकी पूरी फैमिली की इनकम उससे कम है, then you are below poverty line. That means you have no home, you have no shelter, you have no education, you have no mobile,
you have no car, no house, nothing, that means then you fall under the below poverty line. And every day, every night, 20 crore people sleep hungry in India. And I'm sure you all have a good hearty dinner and tuck into your garam rajai. And going to the school next morning makes you sad. But just imagine that 20 crore people are going to sleep without food every night. So whenever you have your dinner, whenever you have your lunch, definitely what will you say? Thank you, God. Gratitude. There are 40 lakh rag pickers. Why I'm showing you all this is because हम भी इनमें से कुछ हो सकते थे. ये अपनी किसी गलती की वजह से या अपनी किसी मजबूर कसूर की वजह से ये सब नहीं है. और अगर अब हम इतने ब्लेस्ड हैं तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है. We are born in a family. You are born in a family who could afford all this. That means you are the luckiest few in this country, in this world, on this planet. अठारह लाख बच्चे ऐसे हैं हमारे देश में जिनके पास लिटरली कोई घर नहीं है. हम बात कर रहे थे एक कमरे की, और हमारे यहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि मेरे घर में सिर्फ एक कमरा है. और हमारे पास 18 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके पास घर ही नहीं है. कच्चा पक्का बात की बात है. 3 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, और 41 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बेगरी में हैं, बेगर्स हैं. स्लम ड्वेलर्स अलग होते हैं, रैग पिकर्स अलग होते हैं, बेगर्स अलग होते हैं. एंड द मोस्ट शॉकिंग इज कि इंडिया में 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी चाइल्ड लेबर करते हैं, मजदूरी करते हैं. चाइल्ड लेबर मीन्स 14 साल से कम उम्र का बच्चा जो ढाबे में काम कर रहा है, घर में किसी के काम कर रहा है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, सड़क पे काम कर रहा है, टू हैव अ मील. खाना खाने के लिए उसको काम करना पड़ता है, 8 घंटे 10 घंटे मजदूरी करनी पड़ती है, उसको हम चाइल्ड लेबर बोलते हैं. हर साल इंडिया में 1.5 लाख लोग मर जाते हैं सिर्फ रोड एक्सीडेंट में. 70 लाख लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स पे हैं और अगले 2, 3, 4 साल में मर जाएंगे. हर साल हमारे पास 14 लाख पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कैंसर से ग्रस्त हैं, क्रॉनिक डायलिसिस. तो ये हालात है हमारी सोसाइटी की. दिस इज द रियल पिक्चर. नाउ गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड एंड रिमेंबर द रीजन व्हाई वर यू सैड इन द लास्ट 7 days. हम अपनी मर्जी से इंसान नहीं बने. वी आर बोर्न इन अ फैमिली. क्या उसका नेचर है, क्या कुदरत का खेल है, अभी समझने की जरूरत नहीं है. बट लेट मी टेल यू, इंडिया में ही आपकी कंट्री में 6 करोड़ लोग ऐसे, 6 करोड़ लाइफ्स जो हैं वो स्ट्रे डॉग्स घूम रही हैं. एंड वी हैव 52 लाख कैटल जो स्ट्रे है. So my point of whole this exercise is that instead of being sad, angry or frustrated, just count your blessings. देख सकते हो, सुन सकते हो, चल सकते हो. आज की ये मीटिंग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, स्कूल या कॉलेज जाते हो, फैमिली है, घर है, काफी नहीं है हमारे लिए. But why did I share this with you? What does CityNeeds has to do with all this facts of life? पहली चीज तो ये कि हम इतना oblivious होते हैं, we are not present to these facts of life कि हम छोटी छोटी चीजों पे इतना परेशान हो जाते हैं, इतना उदास हो जाते हैं
कि हम अपनी सारी जिंदगी का फोकस ही उस पर डाल देते हैं कि लगता है कि हमसे बुरी किस्मत किसी की है ही नहीं। सो सबसे पहले तो आपको ये देखना है दैट यू आर द मोस्ट ब्लेस्ड ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। अब आप इसमें कुछ आपने कुछ किया नहीं है ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी। इट इज बाय योर लक, बाय योर कर्मास, और व्हाटएवर यू कैन से दैट यू वर born in a family who could give you all these things. But the point is, if you feel like doing something for others, आपको भगवान ने इतना कुछ ब्लेस किया है, if you want to do something for others, then when will you do it? अगर आप सोचोगे अभी तो मैं स्टूडेंट हूं, अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसे तो कोई मांग भी नहीं रहा आपसे, क्या आप किसी की मदद करना चाहते हो? दैट इज द ओनली क्वेश्चन। अगर आप इतना ब्लेस्ड हो कि भगवान ने आपको जो भी जिस भी धर्म को आप मानते हो, उस गुरु ने, उस रब ने आपको इतना कुछ दिया है, क्या आप एज अ ग्रेटिट्यूड किसी की मदद करना चाहते हो? और क्या आपको लगता है कि आप या आप जैसे लोग मदद करते हैं? डू वी हेल्प पीपल? हम गुरुद्वाराज में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहां पे देखिए कितने लंगर लगे होते हैं, फ्री में खाना बन रहा होता है, लेकिन भिखारी तो बाहर ही बैठा होता है, कपड़ा बट रहा होता है, वहां पे प्रसाद बट रहा होता है, कितना लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन सालों साल वो भिखारी तो बाहर ही बैठा होता है। और ये फिगर्स जो मैंने आपको दिखाई हैं, इनमें तो कोई फर्क नहीं आता। और एक चीज और बताता हूं आपको, दीज आर द एनजीओज विच वर्क अराउंड यू। आप शॉक हो जाओगे अगर आप गूगल करके देखोगे, हाउ मेनी एनजीओज आर देयर इन इंडिया। इफ यू गूगल, कैन समवन गूगल फॉर मी एंड लेट मी नो how many NGOs are there in India? Just Google it and let me know. डिफरेंट कैटेगरीज में how many NGOs होते हैं जो इस कैटेगरी के लोगों की, oh my God, 3 million. Siddhakpit says over 3 million. 3 million का मतलब 30 लाख। अब सवाल ये है कि आप भी मदद करना चाहते हो, आप जैसे और लोग भी मदद करना चाहते हैं, और पूरे इंडिया में 30 लाख एनजीओज भी हैं। 30 लाख मायने रखता है। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, ये सारे एनजीओ जो हैं ये इसी कैटेगरी में काम करते हैं। कोई फिजिकली चैलेंज पे काम कर रहा है, कोई ड्रग एडिक्ट पे कर रहा है, कोई हंगर पे कर रहा है। 3 मिलियन, 30 लाख बहुत होते हैं। एंड यू विल ऑल्सो बी सरप्राइज कि these are the ministries and departments जो इन कैटेगरी को हेल्प करती है। करोड़ों अरबों रुपए की ग्रांट आती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्सीडेंट्स को कम करती है, एग्रीकल्चर जो है वो फार्मर्स का वेलफेयर करती है, ट्राइबल अफेयर्स जो हैं वो ट्राइब्स जो रहते हैं जिनको हम बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में रहते हैं वो करते हैं। तो इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, 30 लाख एनजीओ हैं, आप भी हो, आपके पेरेंट्स हैं, फिर भी फिगर्स में कोई बदलाव नहीं आ रहा। द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? रूट कॉज क्या है? रूट कॉज ये है कि जो हेल्प करना चाहता है, he doesn't know whom to help, where to help, when to help, what to help, and how to help. Let's say for example, let me ask you, आप सब स्टूडेंट्स हो, आप एजुकेशन से जुड़े हो, अगर आपको एक असाइनमेंट दी जाए कि डू यू वांट टू टीच for 1 hour in a week on any subject, just type if you are willing to
अगर आप एक हफ्ते में 1 घंटा पढ़ाना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो अगर सब लोग यस कह रहे हैं तो व्हाई डोंट यू टीच? सिंपल। अगर आप हर हफ्ते किसी एक आदमी को खाना खिला सकते हो, वुड यू लाइक टू फीड समवन? एक खाने की प्लेट 10 रुपए 20 रुपए की आती है, बाजार से भी ले लो, रेडी से भी ले लो, बट क्या आप हर हफ्ते किसी को खाना खिलाते हो? नहीं खिलाते, खिला ही नहीं पाते ज्यादातर लोग खिला नहीं पाते। हाँ, आई नो गीतांजलि, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, शी इज अ यंगेस्ट volunteer. Gitanjali is a 6th standard student and she has her own YouTube channel जो कि स्लम्स के बच्चों के लिए अवेलेबल है. इट इज फैंटास्टिक. बट वी हैव राइट नाउ 70 पीपल हियर. मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि अगर सब लोग, प्रॉब्लम कहां आती है, आप करना भी चाहते हो, आप कर भी सकते हो, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है मदद किसको चाहिए, कहां चाहिए, क्या चाहिए, कब चाहिए, मैं कैसे करूं. तो दिस इज द रूट कॉज प्रॉब्लम. और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इन जो बेनिफिशियरीज हैं, इनको ये नहीं पता कि हमारी मदद कर कौन सकता है, कौन सा एनजीओ मदद कर सकता है, कौन सा मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट मदद कर सकता है, या आप में से कौन इनकी हेल्प कर सकता है. दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम. हेल्प करने के लिए सब तैयार हैं, हेल्प लेने के लिए सब तैयार हैं, बट एक दूसरे के बारे में हम नहीं जानते. So this is the problem that we have tried to address, and that is why CityNeeds was formed. I hope that you are clear now. मैंने आपको ये statistics क्यों दिखाए? What was the problem that we identified in our career when we wanted to help people? That we realized that we do not know the procedures. We do not know कब कहां कैसे किसको मदद की जा सकती है. अगर किसी को ब्लड चाहिए तो वो ब्लड बैंक जाता है और वहां पे ब्लड अवेलेबल नहीं है. इफ यू वांट टू डोनेट ब्लड, यू वुड लाइक टू गिव इट टू अ पेशेंट डायरेक्टली, नॉट टू द ब्लड बैंक जो उसको बाद में सेल करेगा. बट आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से पेशेंट को किस समय कहां पे ब्लड चाहिए? आपको कैसे पता लगेगा किस स्टूडेंट को कौन से स्लम में कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूं या पढ़ा सकता हूं? आपको कैसे पता लगेगा कि जेन्युइनली किसको खाने की जरूरत है या कौन इसको एज अ पेशा बना के चल रहा है? कौन जो बेगर्स हैं हम उसको इनकरेज कभी नहीं करते, बिकॉज जो फिजिकली फिट बेगर्स हैं उनको हम कभी इनकरेज नहीं करते. अगर आप अपने पुरानी किताबें देना चाहते हो, एवरी ईयर यू मूव टू अ न्यू क्लास एंड यू बाय न्यू बुक्स. Oh, great, Rajana, I know you are also doing a great job. So अगर आप अपनी पुरानी बुक्स देना चाहते हो तो यस, जैसे इन्होंने कहा, हेल्पिंग हैंड्स क्लब इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन लुधियाना जो आप जैसे बच्चों से पुरानी किताबें लेती है और उन जैसे बच्चों को वो किताबें देती है सो दैट दे डोंट हैव टू स्पेंड मनी. इसी तरीके से वी नीड टू क्रिएट अ ब्रिज, अ ट्रांसपेरेंट ब्रिज. और आज टुडे वी आर ऑल ऑन सोशल मीडिया, वी आर ऑल यूजिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब. ये सारी इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांजेक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म हु कैन वेरीफाई द रिक्वायरमेंट, who can identify the needy person and who can actually tell the other person कि यहाँ पे जरूरत है, जेन्युइन है, अगर आपको लगता है तो आप इसकी हेल्प कर दीजिए. अगर there is no compulsion. So we discuss the problem, we discuss the facts of the society.
एंड उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम सब क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन कलेक्टिवली क्रिएट अ डिफरेंस. दैट इज हाउ सिटी नीड्स वाज बॉर्न. एक आपने प्रोवर्ब सुना होगा, चैरिटी बिगिंस एट होम. सो सिटी नीड्स का मतलब ये है कि आपके आसपास जो ये लोग हैं, यू कैन नॉट प्रोवाइड फूड टू 20 crore people, you cannot, but you can provide to one. But वो one person कौन होगा, कहां होगा, आपके आसपास ही होगा ना, आपके आसपास ही हैं ये इतने जो लोग हैं, होमलेस पीपल, हंग्री पीपल, ये सारे आपके आसपास ही तो हैं, बट हम उनको नहीं देख पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन जेन्युइन है. So that is why we built a complete platform where all this verification is done through the local NGOs, and then through the local NGO or directly you can help the concerned person. Now the question is, when I say the word platform, what is platform? Today platform is, I'm talking about a virtual platform. I'm talking about a website. I'm talking about a proper, technically strong and sound system like Facebook, like other such platforms, जहां पे आपकी सिटी के सारे एनजीओज की वेरिफिकेशन हो चुकी है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है. We have taken their photographs, pictures, और उनके certificates, whatever things, and we have posted on the website. Now, whenever they need something, whenever the NGO needs something, he will post his requirement there. And if you are registered on the website as a volunteer and you choose कि आप किस तरीके की हेल्प करना चाहते हो, आप पढ़ाना चाहते हो, आप खाना देना चाहते हो, आप कपड़ा देना चाहते हो, हाउ डू यू वांट टू हेल्प, आपको सिर्फ वही एनजीओ से कनेक्ट किया जाता है जिसकी जरूरत आपकी ऑफरिंग से मैच करती है, जिसकी जरूरत आपकी ऑफरिंग से मैच करती है. That means we also have people from industry who have registered with us as a donor. अगर कल को हमें प्लांट्स लगाने हैं तो whom we need volunteers. The message will go to only volunteers. It will not go to a person who has shown interest in donating money. So that is the platform. अगर यहां तक किसी को कोई भी सवाल हो, I would love to answer it. Biljinder, kindly unmute कर दीजिए सबको, and if जो questions raise करना चाहते हैं hands, वो आप please you can ask me. जो हमने अभी तक यहाँ पे discuss किया, before I go further, I would like to. Sir, I would like to mention कि मुझे भी हेल्पिंग हैंड क्लब के बारे में आपके साथ जुड़ने के बाद में ही पता लगा. सर, थैंक यू टू यू. You are great, sir. Doing a great cause, really. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Most welcome. Anyone else who has a query, I would love to Excuse me, answer sir. that. Yeah, please. Sir, you very well explained all about city needs and everything, and that's quite inspiring. But I really wish to know what is the purpose of this particular program. Yes. See, when we talk about the campus reporter program, you are clear about it. What is the campus reporter program? Yes, sir. Okay. Now, campus reporter program is basically to report the social causes that you are undertaking, that your institution is undertaking, और उसको एक प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करने का नाम है कैंपस रिपोर्टर प्रोग्राम. नाउ व्हाट डू यू डू इन योर इंस्टीट्यूशन? आप कॉलेज में, स्कूल में कैसी चीजें करते हो, कैसी सोशल एक्टिविटीज करते हो? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कल्चरल प्रोग्राम्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूथ फेस्टिवल, लेकिन क्या आपके इंस्टीट्यूशन में कोई भी सोशल एक्टिविटी होती है एनवायरनमेंट के रिलेटेड? कोई आप किसी एनजीओ की हेल्प करते हो? क्या ऐसी कोई एक्टिविटी होती है आपके इंस्टीट्यूशन में? बिजेंद्र, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए.
ओके, अश्मिता यू सेड यस, उसको आप कहाँ पे रिपोर्ट करते हो? Sir, I don't know about Newspaper. reporting, but sorry. आप उसको कहाँ पे रिपोर्ट करते हो अश्मिता? Sir, reporting, sometimes reporting does not happen, but in our institution like school, there are programs like in one Mahotsav we used to take, we used to a bottle, we used to cut the bottle and put some soil by hanging it on wall, rainwater harvesting kind of things, by this only. Correct. So we want the whole city to know that you as a student are doing something great. It is not कुछ छोटा चीज नहीं है ये. बड़े हो गए ये सब भूल जाओगे, ये चीजें छोड़ दोगे, ये आपके पेरेंट्स नहीं कर रहे, ये मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स नहीं कर रहे. We want to encourage you to do the social work, to do the community work, और उसके लिए this social platform has been built कि जहां पे आप अपने आसपास हो रही कुछ अच्छी चीजों को, अपने इंस्टीट्यूशन में हो रहे सोशल वर्क को, वॉलंटियर प्रोग्राम्स को हाईलाइट करें, एक्सचेंज करें, सिटी लेवल पे एक्सचेंज करें. हाँ जी बुआ, म्यूट कर दीजिए प्लीज. No cross talking allowed. Yes, recently our school donated many things, useful items to handicapped children and spent some time. Beautiful. This is what we are trying to tell you कि सारा दिन हम सोशल मीडिया पे, अखबारों में, टीवी पे सब नेगेटिव न्यूज देखते हैं, सब उल्टे सीधे क्राइम, एक्सीडेंट्स, करप्शन, ये वो चीजें देखते हैं. This is a new platform where we need young reporters to report only the positive things that are happening around you. That's all. This is the basic reason, the basic cause of the campus reporter program. उसका reason क्या है? Why we are doing that? Because हमारे आसपास इतना negative content इकट्ठा हो गया है, इतना हम negative चीजें देख रहे हैं, हमें लगता है कि the world is a hopeless place. जो हम आजकल डिप्रेशन का राइज देख रहे हैं, जो डिससेटिस्फैक्शन देख रहे हैं, it is mainly because we see lot of negative content every day. और आज मीडिया जो है वो पॉजिटिव कंटेंट दिखाने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, एंड दैट इज व्हाई वी चोज यू एज द रिपोर्टर. यू आर द फ्यूचर रिपोर्टर्स ऑफ दिस सोसाइटी एंड यू आर द कैंपस रिपोर्टर्स. वी ओनली वांट कि हम आपको प्रोफेशनली ट्रेन करें. जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, कोई आपको एंकरिंग में ट्रेन करेगा, कोई कंटेंट राइटिंग में, क्योंकि न्यूज राइट कैसे करनी है, फोटो क्लिक कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, ये सब चीजें आप इस प्रोग्राम में सीखेंगे. एंड द एंड ऑब्जेक्टिव इज ओनली दिस, दैट यू प्रोड्यूस पॉजिटिव कंटेंट एंड वी ऑल सी पॉजिटिव कंटेंट, वी सी गुडनेस कंटेंट. हम अपने आसपास कैन वी डू रिपोर्टिंग फॉर पास्ट सोशल एक्टिविटीज? यस यू कैन. जितना पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट कर सकते हो करो. लेट द वर्ल्ड नो अबाउट इट. जैसे जैसे नेगेटिव कंटेंट कम होता चलेगा, यू विल फाइंड दिस वर्ल्ड टू बी अ बेटर प्लेस. सर, एक्सक्यूज मी सर. जी राजन. सर, पीछे से सर मतलब अबाउट अ मंथ हमारे जैसे सर बहुत सारी सर्दी थी, तो मैंने और पापा ने मिलकर हमने सर मलेरकोटले में लोकल एनजीओस की मदद से जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उन्हें विंटर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट की थी. तो मेरे पापा वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं अभी, तो इसलिए सर हमने ये गुड कॉज किया था. तो अगर हमें सर हम ये सब चीजें अपने मतलब स्कूल में ही नहीं कहीं और भी होते देख रहे हैं, या कोई और कर रहा है, जैसे मेरे फादर कर रहे हैं, मदर कर रहे हैं, तो हम उन्हें भी क्या रिपोर्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली आप रिपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली आप करेंगे रिपोर्ट इसको, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये है. यू आर यंग पॉजिटिव रिपोर्टर्स. कैंपस रिपोर्टर इसलिए बिकॉज यू आर बीइंग नॉमिनेटेड बाय द इंस्टीट्यूशन, इसलिए वर्ड रखा गया कैंपस रिपोर्टर. आपके आसपास कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ भी दिखता है नया अच्छा हो रहा हुआ, किसी की हेल्प कर रहे हो, बिकॉज द सिंपल रीजन इज जब आके आप एक पॉजिटिव चीज दिखाओगे, उसको देख के ऑटोमेटिकली हमारा भी मन करेगा वो करने का. जब आपको बार बार लड़ाई झगड़ा दिखेगा तो आप में भी एग्रेशन आएगा. जब आप, how does your organization confirm that all the donations services reach the correct people?
Yes, I'll come to that part. वो हम process explain करेंगे. Where and how we can report about such activities. Yes, this all. ये वाला question हम आपको कल बताएंगे when we talk about the campus reporter. We as a campus reporter report these social initiatives. Great. So we are on absolutely right track because you are getting आपके questions बता रहे हैं कि you are interested in this great mission. So this means आज हम 64 लोग हैं यहाँ पे इस meeting में. अगर हम Excuse हर me, रोज, sir. yes, Good evening, sir. Sir, I wanted to ask, like in this program, sir, like now we are having online programs. So, sir, would there be some practical programs like we have to record and we have to send? see, you have to be patient because अभी तो आज मैं सिर्फ आपको सिटी नीड्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. Tomorrow I'll be covering everything about the campus reporter program, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था that there is an assignment after every session. So अगर आपको हम anchoring सिखाएंगे, we have a professional from Hyderabad who will teach you anchoring. We have a professional from Delhi who's a content writer who will train you. Basic input देंगे, 2 घंटे में आपको पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिस कैसे करना है. We will give you real time assignments. आपकी अपनी टीम्स बनेंगी, 4-4, 5-5 स्टूडेंट्स की टीम्स बनेंगी जो कि उस एक्टिविटी को अंडरटेक करेंगी. और वो एक्टिविटीज क्या होने वाली हैं ये मैं कल बताऊंगा. ये मैं आज नहीं बताऊंगा बिकॉज दैट इज द मेजर क्यूरियोसिटी. वो एक्टिविटीज रिपोर्ट कहाँ करनी है, बनानी कैसे है, क्या क्या अलाउड है उसमें, कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स विल बी डेल्ट टुमारो. टुडे आई एम ओनली एंड ओनली डिस्कसिंग, आई एम ओनली सेटिंग द स्टेज फॉर द एंटायर मिशन. एंटायर मिशन क्या है हमारा? गुडनेस. दैट इज द मिशन. हेल्प पीपल, क्रिएट पॉजिटिविटी, और आसपास के लोगों को खुश रखिए, कुछ करने की कोशिश करिए, खुशियां बांटिए. दैट इज द बेसिक. सर, okay, now someone has raised hands also. Brinda, I think. Brinda, are you there? Brinda had raised hands. Okay. So guys, till now you are more curious about campus reporter. I do understand because you have joined that program. Timing for tomorrow, every session is at 4 to 6 p.m. on weekends, every Saturday, Sunday. So starting today till the next 4 Saturdays and Sundays, 4 to 6 p.m. we have a session on subjects आपको already बता दिए गए हैं. Next session जो campus reporter है, उसके बाद हमारा photography, photo journalism है. Because कैमरा आप सब लोगों के पास है, लेकिन अगर आपने सोशल एक्टिविटीज को मतलब पब्लिश करना है तो हाउ यू हैव टू यूज योर कैमरा, हाउ यू हैव टू क्लिक द वीडियोस, ये बेसिक इनपुट्स आपको एक प्रोफेशनल दे. सो एवरीडे टाइमिंग्स विल रिमेन फ्रॉम 4 to 6 p.m. एंड वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. आपने बीच में क्वेश्चन पूछा था, लेट मी आस्क शेयर हिज क्वेश्चन. Gurmanveer Kaur, yeah, Gurmanveer Kaur has asked, how does your organization confirm that all the donations and services reach the correct people? What processes do you undertake to affirm the authenticity? The most important question of this project has been asked by Gurmanveer Kaur. So for this, I'll go back to the platform because the question is technical, so the answer has to be technical. Baljinder, can you show the website? Baljinder, are you there? Yes, sir. One second. Yeah, I want you to start the website. Now, this is where the platform comes into picture. And let me show you a brief glimpse of the website. The name is cityneeds.info. Whatever your city needs can be listed here. So first of all, you can see the menu, the homepage, and on the top you will find for NGOs. For NGOs. All NGOs. So first of all, Ludhiana has 76, we have 76 NGO partners in Ludhiana.
First of all, if you have to find out an NGO, ऊपर चलिए मेन्यू पे वापस. If you have to find out an NGO, you will first look at it कि किस सेक्टर में वो NGO काम करता है. So let us say we are interested to know the NGOs only who work in education. So the first menu is of education. Now here, down below, you will find only those NGOs who are dealing only with education. You can read the profile, you can see their address, you can see the photographs, you can see what work they have done, and you can also talk to them, you can visit them. So this is a complete directory with the transparent information of what the NGO does. So this is the first step where authenticity comes into picture कि हम आपको बता रहे हैं कि फलां NGO फलां जगह पे है, आपके घर के नजदीक जो भी है, स्कूल के नजदीक जो भी है, आप उसको विजिट कर सकते हो. जब तक आप खुद विजिट नहीं करोगे तब तक आपको किसी और की बात पे यकीन शायद आना मुश्किल है. So these are the NGOs who work only in the education sector. And we have visited each of them personally. We have taken their documents personally. We have checked their certificates, everything. Now let me go back on the top. Jinder, go back to the top again. Let us click on girls and women. हमारे समाज में जो गर्ल्स या वुमेन को प्रॉब्लम एरियाज हैं, वो कौन से एनजीओज हैं जो मदद करते हैं. लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आस एहसास. जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, रिपोर्ट होते हैं, वो दिस पर्टिकुलर एनजीओ इज डीलिंग विद दैट. आप एक बार इनको मिलोगे, इनकी एक मीटिंग अटेंड करोगे, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा. You don't have to believe me. It's the only problem is right now you don't know all these 76 NGOs, where are they, what they do, and where you can, how you can meet them, और किस कैटेगरी में आप उनको मिल सकते हो. So these are the few examples. Number one. Number two, whenever a new NGO has to apply, ऊपर चलिए बजिंदर, और NGOs पे क्लिक करिए, register your NGO. जब कोई नया एनजीओ हमारे साथ रजिस्टर करता है, दैट मींस ये सभी एनजीओज हैव अंडरगॉन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. दे हैव टू गिव अस ऑल द डिटेल्स. ये तो चलिए नॉर्मल हो गया. उसके बाद नीचे आइए. दे हैव टू गिव अस देयर 80G सर्टिफिकेट. दे हैव टू अपलोड देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. दे हैव टू गिव अस देयर ट्रस्ट डीड, उनके फोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स, year of establishment, PAN card, and UID cards. And then our team personally visits the NGO, verifies the documents, check the government websites to find the authenticity. There are government websites जहां पे इनकी verification का procedure होता है कि जो document हम देख रहे हैं वो authentic है, कब बना है, इसके against कोई complaint तो नहीं है, कोई credibility problem तो नहीं है. And then we also ask them which sector they work in and what sort of requirements they have. So this is our process of sometimes when we contact the NGO and ask to visit them, they simply said, do call before coming. Yes, definitely. They would definitely say. So why does this happen? Because see, now this is very interesting. Why does this happen? It happens because they are very much occupied in their own work. जब कभी कुछ एनजीओज ऐसे हैं जहां पे आप कभी भी जा सकते हो, आप मेरे से वो लिस्ट लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ एनजीओज ऐसे हैं जिससे निष्काम विद्या मंदिर है. आप स्कूल टाइम में कभी भी चले जाओ, यू आर वेलकम. आप गुरु अपाहज आश्रम में वर्किंग टाइम में कभी भी चले जाओ, यू आर मोस्ट वेलकम. आप भारत विकास परिषद विकलांग केंद्र में कभी भी चले जाओ, कोई मनाही नहीं है. लेकिन देयर आर सम एनजीओज हु हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज और हु आर नॉट अवेलेबल. ये तो बड़ा देखो, ये सिंपल सा लॉजिक है कि इट्स नॉट अ पब्लिक प्लेस. एनजीओ इज नॉट अ पब्लिक प्लेस, इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपने मेरे को भी मिलना है या मुझे आपके स्कूल प्रिंसिपल से मिलना है तो डेफिनेटली मैं टाइम लेके जाऊं.
बिकॉज हो सकता है वो बिजी हो, अपने और किसी ऑक्यूपेशन में हो, कोई और उसकी कमिटमेंट हो. सो आई डोंट से कि दैट स्कूल इज नॉट ऑथेंटिक बिकॉज उन्होंने मुझे टाइम देने के लिए कहा. सो दिस इज अ वेरी कॉमन रीजन दैट वैसे भी एज अ सोशल जेस्चर we must take an appointment before we go and we meet someone. So I don't see this is the reason for authenticity. Yes, you have to see their work कि वो जो काम कर रहे हैं वो कितना जेन्यून है. अब डॉग शेल्टर है यहाँ पे एक ताजपुर रोड में, कभी भी चले जाओ आप वहां पे घूम सकते हो, देख सकते हो, लेकिन अगर आपने उनके उनके ट्रस्टी को मिलना है, उनके वर्कर को मिलना है, तो डेफिनेटली आपको टाइम लेके जाना पड़ेगा. सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम लेके जाने में. मुझे भी अगर आपने मिलना है, आज देखिए इस मीटिंग के लिए हमने कब से टाइम फिक्स किया हुआ है. सो प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट. सो देयरफॉर this is the process how we invite NGOs, how we register them. And now we go back to सबसे important question was कि आप कैसे ensure करते हो that your contribution has gone to the right place. First of all, we will always recommend that once visit the NGO to whom you are going to donate. And we will help you in that. We will take you to different NGOs wherever you want to go, and we will show you what they do, how they work. If you get convinced, then only you can volunteer there. Obviously, no one is going to waste their time. So now let's say we click on the button donate. So when I click on donate, I will see different options. Let's say ये एक NGO है, इसका नाम है Clear Welfare Association. ये लुधियाना के जितने भी ऑर्फनेजेस हैं, देयर आर 4 ऑर्फनेजेस इन लुधियाना, इन पे काम करता है. नाउ दे हैव अ रिक्वायरमेंट, लेट्स से दे हैव पुट द कॉज, इसको क्लिक करिए, हेल्प ऑर्फन स्टैंड ऑन देयर फीट विद स्किल ट्रेनिंग. इस एनजीओ ने अनाथ आश्रम में, ऑर्फनेजेस में स्किल ट्रेनिंग की क्लासेस लगाई. ये प्ले करेंगे आप जरा, ऊपर वीडियो है, आई थिंक दिस वीडियो इज देयर. या म्यूट, आवाज नहीं आ रही. Now she is a qualified doctor. ये ऑरिसन हॉस्पिटल में काम करती हैं, पेडिट्रिशियन है, चाइल्ड केयर मेंबर की, चाइल्ड केयर एसोसिएशन की मेंबर हैं लुधियाना की, और 4 ऑर्फनेजेस में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. Now we have met them, we have seen their work, we have created a video out of that, and that is displayed here as a 1-minute video. Right? There's still some problem in the audio. Anyway, this you can listen later. I don't know why it is not audible. Speaker पे click करिए. Now, anyway, let's go back to the main screen. इसमें ऑडियो में कुछ इश्यू है. एस्केप करिए. Now come down. नीचे थोड़ा स्क्रॉल कीजिए. You can see a complete write-up about this requirement कि यहाँ पे कंप्यूटर स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, क्राफ्ट स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, स्टिचिंग सिखाई जा रही है, मोबाइल रिपेयर का वर्कशॉप सिखाया जा रहा है. तो there are 4 different NGO, 4 different orphanages and a juvenile center in Ludhiana जहाँ पे ये काम करते हैं. इन्होंने प्रॉपर एक अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया है जिसमें कि they have said that they require 3,10,000 rupees to complete the project, जिसमें से they have raised funds through us for 77,500 rupees. Now how does this happen? अगर आप ये फिगर नोट कर लें, this is 77,500. Just note down the figure, 77,500. Go down, press on donate, fill your name, and let's say हम इसमें से 100 rupees contribute करना चाहते हैं. So 77,500 was already paid, and now we are contributing 100 rupees to this particular NGO. And when we donate this, now what should happen? The money has to go directly to their bank account, not our bank account, not the beneficiary's bank account, but NGO is an organization.
जैसे आपका इंस्टीट्यूशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन, वी आर अ ऑर्गेनाइजेशन, an organization has accountability and answerability also. So similarly, a NGO is also a organization जिसके accounts की checking जो है वो government का काम है, वो हमारा काम नहीं होता. So once I pay 100 rupees, it is automatically reflected on the main website only. The earlier amount of 77,500 will automatically increase by 100 rupees, and the donor gets a receipt there and then. It is transparently available, and the NGO also gets to know what has been contributed to me, who has contributed that money, and he is answerable to that person. This means you will automatically be on their mailing list. जब भी वो कोई काम करेंगे, जब भी उस मनी को वो यूटिलाइज करेंगे, they will automatically inform you. So you get the receipt of 100 rupees and go back to the cause. Can you refresh it? I think that there some payment was failed. Let me check again. Payment was rejected, I suppose, it's what I have seen. Yes, sir. So if there is some Yes, issue sir, in it the was payment, failed. I have also seen. okay, the payment has failed. So there was some problem in your transaction, Baljinder. Anyway, let's not waste time on this. My point is very clear that once the donation is done, you automatically receive the receipt. The money is reflected here, and the NGO becomes accountable because you are as a confirmed donor with the NGO. Now you can go there anytime. You can see what is happening and how the entire resources are being utilized. So this is a small example. जब आप फिजिकली वहां पे विजिट करोगे, मेरे से इनिशियली स्टार्टिंग में किसी ने पूछा था दैट ऑनलाइन थ्योरी के अलावा व्हाट आर द प्रैक्टिकल थिंग्स. द प्रैक्टिकल थिंग इज दैट द टीम ऑफ 5 कैंपस रिपोर्टर्स विल विजिट 1 NGO. वो मैं असली चीज जो है आपको बाद में बताऊंगा. आप कब विजिट करोगे, कैसे आपको हम उसमें कोऑर्डिनेशन करके देंगे, क्या करोगे वहां पे और क्या करके वापस आओगे. ऑल दीज थिंग्स दैट आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो ओनली. But for today, I'm only telling you that this is how the whole system works. If it, अगर आपका payment through हो जाता है तो हमें दिखा दीजिए Vijender. Otherwise, I would like to share, go back to the main, आपकी main website पे. हाँ, okay. Now here, if you click on the button of volunteer, ऊपर जाइए, menu पे volunteer click करते हैं. This is the one-time registration. Sir, is it safe to fill the personal details and accounts here? Let me tell you, you are not filling the details on CityNeeds website. You are actually making the payment on the bank's website. जैसे आप Paytm use करते हो, Google Pay use करते हो, you are actually using that. We are only a interface. आप Amazon पे shopping करते हो, जब आप payment की details डालते हो, तो that are not going to Amazon. They are directly going to the banker. So banks are made for this purpose only, and हमारे पास कोई mechanism नहीं है, किसी भी private organization के पास mechanism नहीं है कि वो आपकी accounts की details जो है वो ले सके, वो आपकी payment gateway की details ले सके. There is no mechanism. So this is 100% e-commerce पे दुनिया चल रही है आज की डेट में. 100% banking is online. So this is something very similar to that. जैसे आप e-commerce use करते हो, Zomato use करते हो, मूवी की टिकट खरीदते हो, सब जगह जब आप अपनी डिटेल्स फिल करते हो, सेम इज द पैटर्न हियर दैट यू आर गिविंग द डिटेल्स टू द बैंक, नॉट टू अस. ओनली योर ईमेल आईडी इज स्टोर्ड हियर. यस, Gauri says she has already registered as a volunteer. Now this is something very important for all of you कि जब आप as a volunteer register करते हैं, most important is, चलिए नाम सिटी वगैरह वो सब तो आ ही जाता है. You have to select, नीचे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, how would you like to help? Would you like to volunteer? Would you like to donate money? Or would you like to donate material? Material में कुछ भी हो सकता है, books, food, clothes, blood, stationery, anything it can be. And then you have to only choose कि आप किस सेक्टर में इंटरेस्टेड हो. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जनरली हमने देखा है, स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड मोर either in education or helping the
orphanages or helping the senior citizen homes or environmental projects. तो generally students जो हमारा past experience है उसमें generally students जो होते हैं वो इन्हीं sectors में ज़्यादा register करते हैं और जो donation होती है money वाली donation होती है उसके लिए लोग generally ज़्यादा health sector में contribute करते हैं because वहाँ पे उनको और कुछ पर्सनल कंट्रीब्यूशन नहीं करना, पैसे दिए, पेशेंट का इलाज हो गया, बात खत्म हो गई. सो यू हैव योर चॉइस कि आप किस तरीके के सेक्टर में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो. ये वन टाइम एक्सरसाइज आपकी रिकॉर्ड हो गई है. अब जब भी कोई नया एनजीओ, कोई भी एनजीओ अपनी एक रिक्वायरमेंट पोस्ट करता है तो आपको ईमेल के थ्रू उसकी ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन आ जाती है. देन इट इज योर चॉइस वेदर यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन दैट or you don't want to contribute. That is your choice. Our job is only to inform you that this is the requirement and this is how you can help. And the best part is we encourage you to visit the beneficiary. अगर वो पेशेंट है, कोई वो स्लम है, कोई एनजीओ है, we strongly encourage कि आप एक बार हमारे साथ जरूर चलो. आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने इंस्टीट्यूशन के साथ एक बार जरूर विजिट करो. Because once you see things personally, that is the time when you start believing. So we are only trying to connect you with that. So these are the three major things on our website. जो एक प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया, दिखने में सामने से बड़ा सिंपल लगता है, but it's a complex artificial intelligence based program जिसमें कि NGOs की requirements को मैच में किया जाता है और आपको सिर्फ आप ही के इंटरेस्ट की चीजों को highlight किया जाता है, so that there's not lot of information being pushed to you, because if there are 70 NGOs asking for different things, you will get 70 mails every week. Not that. So we want you to receive only 1 or 2 mails occasionally as per your interest. And then we have a blog also, which I'll not talk about right now, because ये blog एक ऐसा informative platform होता है जिसके ऊपर हम different subjects की बात करते हैं. Subjects means like, let me show you a glimpse of this. Volunteer program पे click कीजिए. Tinder, if you click on the volunteer programs on the bottom. नहीं, ऊपर चलिए, टॉप पे जाइए, होम पेज पे जाइए. Here you have, नहीं ऊपर चलिए, टॉप पे. Go to the top, home page. Volunteer programs. Now we also have different sort of volunteering programs. जैसे campus reporter is again a volunteering program, but there are 10 different programs also. You can join as a volunteer. You can join as an online contributor. You can join as a physical contributor. आप NGOs की जाके help कर सकते हो. You can train people in the slums about menstrual hygiene. You can train people. You can first learn yourself and then train people for child abuse and awareness programs. So these are all different volunteer programs being undertaken by different NGOs. Consumer rights, आप जो भी shopping करते हो, आपके घर में जो भी चीज आती है, you have certain fundamental rights about your money. So all these things we keep on teaching the students and from time to time. So ये सब जो है ये optional चीजें हैं. आपके घरों में बहुत सारे domestic help होती है, drivers हैं, मालीज हैं, and you must not be knowing. Go back to this place. मैं आपको छोटा सा एक tip देता हूँ. Go back. हाँ, यहाँ आइए. I'm sure आपके घरों में जरूर कोई ना कोई माली, कोई ड्राइवर, कोई पियोन, कोई कुक, इस टाइप के लोग होंगे. कोई जैसे मेड्स होती हैं वो होंगे. There are n number of government schemes available for these people. Labor. Ludhiana is known for manufacturing. Do you know that Ludhiana has got 16 lakh labor, मजदूर जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, and हर एक मजदूर के लिए गवर्नमेंट की लाखों रुपए की ग्रांट है, लाखों रुपए की, जो कि उनको नहीं पता, वो अप्लाई नहीं करते और वो उनको मिलती नहीं है. If your parents, your father, your चाचा, your ताया has a factory, ask them कि अगर आपके लेबर के घर में किसी की शादी हो, लड़की की शादी हो, is there any help which is available? You will be shocked to know
31,000 rupees shagun is given by the Punjab government to any daughter of any registered laborer in Punjab. 31,000 rupees shagun, which is non-refundable. ये छोटी सी बात, this is just an information. We are not asking for money. This is the information which we want you to spread. So that is how you become the campus ambassador, the goodness ambassador. कि अगर आप किसी लेबर की लड़की के लिए एक छोटा सा उसको हेल्प करके एक पेपर फॉर्म फिल करके उसके डॉक्यूमेंट पूरे करा के if they can get 31,000 rupees, what a great help it will be. अगर उनके घर में किसी का ऑपरेशन है, कोई बीमार है, तो गवर्नमेंट pays up to 2 lakh rupees for treatment, up to 2 lakh rupees. अगर किसी लेबर के बच्चे ने पढ़ाई करनी है तो मिनिमम 6,000 से लेके 45,000 रुपीज पर एनम तक गवर्नमेंट ग्रांट देती है. मींस नॉन रिफंडेबल. दैट मींस फीस गवर्नमेंट पे करेगी. बट पीपल आर नॉट यूजिंग इट बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट. लुधियाना में मुश्किल से 600 लोगों ने ये स्कीम अवेल की है. मुश्किल से 600 लोगों ने. एंड देयर आर 16 लाख लेबर फैमिलीज इन लुधियाना. अगर आप में से कोई बंदा इसी के ऊपर वॉलंटियरिज्म करना शुरू कर दे, पैसे की तो जरूरत ही नहीं. So many government schemes are available. So the point is कि if the intent is there to help someone, then the possibility is there, and we facilitate you to help people in different ways. Donation is not the only way to help. There are 10 different ways to help also. So now going back to what we have done till now. Now, thank you, Baljinder. I'll share my screen now. So here we were. So what we do at CityNeeds, I hope this is clear to you, and how we do, how we notify the volunteers, how we notify the NGOs, how we notify the donors. I hope this initial glimpse makes you clear of this. Gradually, जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम practically करेंगे, तो you will be, more clear about what I'm saying and how we actually do this. Now let us say कि हमने past में, yes, Manya Agarwal has raised the hands. Please unmute her. Baljinder, can you unmute Manya? No, she unmute. नाम नहीं डिस्प्ले हो रहा. मान्या, आपने किस नाम से किया हुआ है? चलिए आप 1 मिनट के लिए सबको अनम्यूट कर दें. Manya, I can't see Manya here in the list. Okay, Manya, speak out now. Everyone is unmuted. I think she has just dropped out. Once you are back, you can again raise the hand and I will invite you back. So I hope by now you are basically clear about what does the NGOs do and how do they help and what CityNeeds does. I think these are the basic things that we would like to have cleared with you. Moving forward, I'll just like to share with you what we have done so far. Now, what we can do is we can donate material in terms of, I've already said कि घरों में बहुत सारा आपके पास वो पड़ा होता है, कपड़ा पड़ा होता है पुराना. Right now also, if you want to donate some old clothes, I'll give you the location where the camp is occurring. Otherwise, we have it every month where you can donate your old clothes, old shoes, your books, whatever you want to donate, but fresh food. Old food is not allowed. So going forward,
These are the few events that we have done in the past, and this makes you more clear about City Needs. हमने स्टार्ट जब किया था तो हमने एक एनजीओ एक्सपो किया था जिसका आपने वीडियो स्टार्टिंग में देखा था. Again, all these videos we'll share with you also so that you can see them again. You can share with people also. In this, more than 45 NGOs had participated. All government departments had participated. And it was exhibition, first of all ever kind in Punjab, जहाँ पे जो local NGOs हैं उन्होंने इसको अपने काम को दिखाया था और various institutions के बच्चों ने आके उनको visit किया था, public ने उनको visit किया था. So this is some of the press coverages where more than 60 participants had come forward who are doing a great job in your city. So I don't know how many of them you know, but next time, whenever this expo is there, we'll definitely invite you so that you can have a one-to-one interaction with the NGO of your choice. Now, this is another example of what we have done जब हमने COVID का दौर चला था. So if you recall, there was a huge problem in vaccination. And all these NGOs got together and we conducted more than 700 vaccination camps. More than 700 vaccination camps means you can say around 4 lakh vaccinations were undertaken only by the NGOs along with the district administration. And then finally, all these NGOs were duly regarded and appreciated by the Deputy Commissioner and all the other concerned officers of your city. So these opportunities keep on coming to us in different ways. Then a lot of students, especially from Satpal Mittal School, a lot of students and teachers had participated to make a Covipedia. Covipedia is basically, it's a 200 video library by 30 different doctors of Ludhiana, जिन्होंने कोविड के बारे में 2-2 मिनट की वीडियोस जो थी वो बनाई थी और पब्लिक को हमने अवेलेबल कराया था, so that you can take timely precautions, you can go for the right kind of treatment, and there is no extra panic, there is no rumor. All this job was done by people like you only. And then these are the 12 girls from our NGO partner, which is the name is Initiators of Change. These 12 girls have counseled around 300 COVID patients in Dayanand Medical College. You'll be surprised to know. These young girls, they are mostly in college of psychology from different institutions. इन्होंने 300 पेशेंट्स को अडॉप्ट किया था, जिनकी फैमिलीज को और जिन पेशेंट्स को इन्होंने डेली कॉल करके काउंसिल किया था, उनके पैनिक को रिड्यूस किया था एंड उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको हॉस्पिटल अथॉरिटीज तक और उनकी फैमिलीज तक उनको पहुंचाया था. So they did a remarkable job and they got their appreciation from the DMC and the district administration. Then जितने भी कैंप्स लगे थे, वैक्सीनेशन कैंप्स लगे थे, वहां पे जो नर्सेज होती थी, जो इंटर्न्स होते थे, उनके लिए 1 महीना सुबह शाम का खाना जो था वो बेसिकली इन लोगों ने भेजा. 1 महीने का सुबह शाम का खाना वॉलंटियर्स ने भेजा एंड देयर वाज एन एनजीओ हु वाज बैकिंग अप द होल प्रोजेक्ट, जिसमें 3 लाख रुपया लगा. और इन लड़कों ने घरों में से पैकिंग करके, जो आपका लोकल वो एक कम्यूटर है, हम हैं आई थिंक, उसके थ्रू इन्होंने सभी कैंप्स में डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग नाइट्स शिफ्ट के लिए इन्होंने मटेरियल ईटिंग का डिलीवर किया. देन वी ऑल्सो सेलिब्रेट द वर्ल्ड बुक्स डे जो 23 अप्रैल को होता है, बिकॉज सेशन इज ऑलमोस्ट ओवर. इस पे भी इस साल भी हम करेंगे दैट जो आपकी बुक्स यूजलेस हो गई हैं, जो आप पढ़ चुके हो, जो बेकार डंप होएगी, उनको आप डोनेट कर सकते हो और वहां से वो किताबें हम लेके जाते हैं जो स्लम्स के स्कूल्स हैं या जो एनजीओस हैं जहां पे फ्री में एजुकेशन दी जाती है. सो दैट इट्स नॉट मनी दैट सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम, इट इज योर कंट्रीब्यूशन इन एनी वे दैट कैन हेल्प पीपल, एंड दिस इज ऑल्सो एक्ट ऑफ गुडनेस विच इज अगेन टेकन अप एज अ कैंपस रिपोर्टर. तो अब जब आप नेक्स्ट टाइम बुक्स डोनेट करेंगे, वहां जाएंगे, यू कैन ऑलवेज मेक अ न्यूज एंड रिपोर्ट ऑन प्लेटफॉर्म. दिस इज अ एनजीओ कार्निवल. ये भी आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा होगा. दिस वाज प्राइमरीली डन बाय स्टूडेंट्स. आप ये देख रहे हैं पिक्चर में, देयर आर यंग स्टूडेंट्स ऑफ अ एनजीओ जिन्होंने हैंडीक्राफ्ट की चीजें बनाई थी एंड दे सोल्ड इट बिफोर दिवाली इन दिस एनजीओ कार्निवल.
एंड वॉट एवर प्रोसीड्स केम, जो भी वहां से उनको इनकम हुई, उन्होंने ब्लाइंड स्कूल में उसको डोनेट किया, वहां पे जो वाटर कूलर लगवाया, उसके लिए जो भी चीजें उनको चाहिए थी वहां पे मुहैया कराई. सो इस तरीके से दिस वाज अ ब्यूटीफुल कार्निवल. ये वीडियोस मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, सो दैट राइट नाउ वी डोंट स्पेंड टाइम ऑन दैट. One by one we'll keep on adding to the WhatsApp group. You keep on sharing, liking, give your comments there, and keep on sharing in your network also, so that more people get to know about the goodness activities. और रिपोर्टर का काम क्या होता है? रिपोर्टर का काम होता है बेसिकली अपने आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसको पब्लिक तक लेके जाना. बट इन योर केस कैंपस रिपोर्टर और गुडनेस रिपोर्टर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों को हाईलाइट करना. बुरा हाईलाइट करने के लिए we have TV, we have newspapers, we have lot of other media channels. We need you as reporters only to talk about positive content, only to talk about goodness content. So this is again the volunteers work from different institutions who manage this entire program of Carnival. And here the partner was HDFC Bank, who sponsored the entire activity. So you can see all young students from different institutions joining hands here. So this was another plantation drive, which was a massive plantation drive, जो last year हमने undertake की थी, last to last year undertake की थी. पूरे लुधियाना में institutions के students ने, जो student interested थे, उन्होंने हमारे से पौधे लिए and पौधे लेके अपने यहाँ पे लगाए और उनको adopt किया basically एक तरीके से. And that's here what they are being appreciated by the then Deputy Commissioner and the District Forest Officer. Now this is another beautiful program जो हमने अभी recently last summers में किया है, इस बार फिर से करेंगे. I would like to show you video of this. Let me click on this. ये एक ऐसा था जो tree ATM van था. You can see a van in this particular picture, where a van was designed for 1 month and it was made available to public. और यहाँ पे आप एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करते थे. यू यूज टू फिल अप योर एड्रेस और मेरे को इतने ट्रीज चाहिए, ये वाले चाहिए. हमारी ये टीम जो थी वॉलंटियर्स की और ये वैन लेके वहां पहुंचती थी, वो आपके घर जाती थी एंड वहां पे हम लोग उसकी ड्रिलिंग करते थे. आई वुड लाइक टू शो यू द वीडियो आल्सो, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, okay, let me know, can you see the video? Vijender, is it visible? Yes, sir. वॉइस नहीं आ रही सर.
Okay, so now we are moving towards the end of this presentation. Can you see the presentation now, Vijender? Yes, sir. Okay, great. But sir, full screen. Okay, fine now. This is another event which was one of the most interesting. देखिए ऐसे बहुत सारी activities होती रहती है, मैं सारे नहीं दिखा पाऊंगा आज, but I'll just share जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है. This is a दान उत्सव where we had I think 7 different institutions of Ludhiana जिन्होंने overwhelmingly इसमें participate किया था. इसमें आप यकीन मानिए कि this stadium we had taken from the municipal corporation और ये 7 दिन के लिए ड्राइव चली थी जिसमें आई रिमेम्बर DAV was there, then Satpal Mittal was there, BCM was there, DCM was there, St. Jesus was there, 7-8 Sacred Heart was there, 7-8 institutions were there जिनके students ने, this is also worth seeing the video. Let me show you. This is a 1.5 minute video. I would definitely like to show you this. एक्सक्यूज मी सर, आई वुड लाइक टू मेंशन कि इतने ज्यादा हमारे पास डोनर्स आ गए थे तब हमें एक्सटेंड करना पड़ा था. आपने एक्सटेंड किया था सर फिर. Yes, that's right. यस सर वॉइस नहीं आ रही है, साउंड शेयर कर दीजिए. ऑडिबल नहीं है सर. ऑडिबल नहीं है? नो सर. बलजिंदर जी. सर मैं यस सर, काइंडली साउंड शेयर कर दीजिए. मुझे लगता है सर ऊपर से साउंड शेयर ऑप्शन होती है जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं सर, वो नहीं शेयर. मल्टीपल पूरा ही शेयर हुआ है. बलजिंदर जी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर लेट मी प्ले द वीडियो. हाँ, आप प्ले कर लीजिए. मेरे जो थॉट है. Okay. Now it's audible. Strongly audible. So this activity we do every year with the local institutions. This is a Dan Utsav where you can contribute anything that you want to. And इसमें हमारे पास तकरीबन 15,000 लेडीज सूट्स आए, 5,000 के करीब जेंट्स के कपड़े आए, 5,000 के करीब बच्चों के कपड़े आए, अराउंड 2,500 हमारे पास टॉयज आए, अराउंड 2,000 के करीब बुक्स आई. सो ये सारा सामान जो था
इन्हीं 60 एनजीओ में ये सारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया. So these activities are also, you can see everything is undertaken by the NGOs and their volunteers. Now we need campus reporters to capture such things and post on the platform. आपके आसपास जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा दिखता है, जो आप बाकियों को दिखाना चाहते हो, you have to just capture it professionally and share the content with us. So I'll be now rushing through because हम आखिर में 10 मिनट जो हैं वो क्वेश्चन आंसर्स पे देंगे. And the most important event for your student community is the Happiness Week that we celebrate every year. From 17th March to 22nd March, this event is only and only meant for the institutions and the students, where there is a 7-day program where you as a team can visit one NGO of your choice. So last year जो ये event हुआ था उसका मैं आपको एक glimpse अभी दिखा दूंगा, so that you are ready. तब तक आपके exams भी over हो जाएंगे and you will be available for the enjoyment part, because this is a great fun activity. So go just watch this video. उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, रोने की वजह कम है, हंसने के बहाने ज्यादा, जिद है मुस्कुराएंगे, खुश रहने का है वादा. उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा. तुम दिल से अगर पूछोगे, वो खुश रहना ही चाहे. जब सच्चे मन से मांगो, तो खुल जाती है राहें. तो खुल के खुशी लुटाओ, ये क्या है आधा आधा. उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा. उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा. उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, रोने की वजह कम है, हंसने के बहाने ज्यादा, जिद है मुस्कुराएंगे, खुश रहने का है वादा. उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा. तुम दिल से अगर पूछोगे, वो खुश रहना ही चाहे. जब सच्चे मन से मांगो, तो खुल जाती है राहें. तो खुल के खुशी लुटाओ, ये क्या है आधा आधा. उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा. उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा. So we are done with the events part. बहुत क्विकली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मेन मकसद है वो ये है कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, these are the few causes and the success stories that have already been undertaken in the past, where जो एक्सरसाइज मैं आपको देने जा रहा हूँ अभी, not today but down the line, once you are fully trained, when you visit an NGO, you will go and understand their requirement. उस रिक्वायरमेंट को हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे एंड कलेक्टिवली we will create the resources, and then you will take that particular thing and go and give to that NGO. ये पूरा एक्सरसाइज जो है, असाइनमेंट है जो होगा, जिसको हम रिपोर्ट करेंगे. इसमें हमारे साथ दैनिक जागरण, लुधियाना लाइव, डेली पोस्ट, फास्टवे, ऑल दीज मीडिया चैनल्स आर देयर. दे विल गो विद यू. आपने देखा होगा पीछे भी कि द प्रीवियस हैप्पीनेस वीक वाज स्पॉन्सर्ड बाय लुधियाना लाइव. Similarly, now your content जो आप प्रोड्यूस करेंगे, that can be posted by these news channels also. So our purpose is कि पहले आपको ट्रेन करें, आप उस कंटेंट को प्रोड्यूस करें, और अगर उसमें से कोई बहुत अच्छा कंटेंट आता है तो उसको मेन न्यूज में, मेन मीडिया में लेके जाया जा सके.
Now, with this, I will request Paramjit, if you can, Paramjit, display some of the success stories in the past. Before I give the assignment, you have 5 minutes just to give a brief of क्या कहते हैं, what are the few success stories जो कि हमारे volunteers ने through our platform cover की है. So just have a look at that. Paramjit, are you there? And in the meantime, मैं आपको एक chat पे share कर रहा हूँ. मैं पवन कुमार सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. Can everyone click here and join this group of volunteers? बेटी के इलाज में अपना योगदान दिया और मैं अपनी बेटी को सही सलामत I'm sharing this link. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. Please click on this and join the group so that you will not be conducting these meetings so easily, so frequently. सर ये सिटी नीड्स कम्युनिटी वाला फेसबुक पेज है. Yes, yes, yes. सर ये ऑलरेडी ज्वाइंड है जिनका जैसे सर किया हुआ है पहले. हाँ, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं आज, जो नए वॉलंटियर्स हैं, उनके लिए है कि प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप so that you remain updated with all the activities which are happening there. आप तो पुराने हो इसमें. Paramjit, are you there? Yes, sir. So can you just run through that? Yes, sir. After this 5 minutes presentation, I'll give you the assignment and then we'll audit the session. और हम कल 4 बजे मिलेंगे for detailing on the campus reporter program. Today we had only talked about the CityNeeds program. Today I have great news for you all. Shambhu आज finally hospital. अब डिपेंड ये करता है कि आप अपनी assignments को कितनी ईमानदारी से करते हो. So now that's what we have to see कि आपने 1.5 घंटा spend किया हमारे साथ, टाइम इन्वेस्ट किया आपने. अब फाइनली अगर उसको यूटिलाइज करना है, उसको आगे लेके जाना है, तो यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट. सो वी हैव टू सी कि आप उस असाइनमेंट को कितनी रिलीजियसली करते हो. तो ओवर टू परमजीत. Very difficult for the child to get through this phase, but unfortunately it's not over yet. क्योंकि अभी भी टाइम लगेगा उसकी रिकवरी में, 2-3 महीने लगेंगे. And adding on to it, initially उसके पापा ने उसकी ट्रीटमेंट. Now I'll just give you a glimpse of this story. ये हमारे पास एक बच्चा आया था लेबर का, जो कि जलते हुए पानी में गिर गया था, मतलब बॉइलिंग वाटर में गिर गया था, and he was fully burnt. वापस चलिए जरा उस पे. And the expense was around 3 lakh rupees in DMC. So Shambhu was the amount was 1.5 lakh rupees, जिसमें से 50% हॉस्पिटल ने वेव ऑफ कर दिया और 83,000 हमारे वॉलंटियर्स ने डोनर्स से इकट्ठा किया on this platform, and they paid to the hospital and get 3 surgeries done for this little child who otherwise would have never been able to get this treatment done. So this is one of the cases that has been dealt by CityNeeds. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा. जैसे एक स्लम्स में स्कूल है डू गुड फाउंडेशन के नाम से. इन्होंने एक प्रॉपर स्मार्ट क्लास बनाया है. जो स्टूडेंट्स मोंदई हॉस्पिटल की साइड पे रहते हैं शेरपुर चौक पे, दे कैन विजिट दिस स्कूल ऑल्सो. इट्स अ स्कूल इन द स्लम्स. आई विल शेयर द वीडियो ऑल्सो, जहाँ पे प्रॉपर एक वो बनाया गया, स्मार्ट क्लासरूम बनाया गया, जो कि CBSE ICSE स्कूल्स में होता है, जिसमें बायजूस टाइप का कंटेंट भी जो था वो हमने प्रोवाइड कराया. इज दिस वीडियो अवेलेबल? एक पुरानी कहावत है, जब एक लड़का पढ़ता है वो सिर्फ खुद पढ़ता है, पर जब एक लड़की पढ़ती है वो अपने पूरे परिवार का विकास करती है. डू गुड फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसने इस ज़रूरत को बहुत करीबी से महसूस किया और उन्होंने लुधियाना पुलिस के साथ बाबा दीप सिंह नगर में एक वेड़ा तिया दी की स्थापना करी. इस वेड़ा में यहाँ पे कुछ ही बच्चे बहुत थोड़ी गिनती में आए थे और वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थे, पर अब
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन बच्चों की गिनती बढ़ती जा रही है और अब उनसे बात करके उनके कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत फ़र्क आया है। सिटी नीड्स के साथ मिलके हम यहाँ पे स्मार्ट स्कूल की स्थापना कर रहे हैं जो आजकल बहुत ज़रूरी है। बच्चे नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ पढ़ाई करें। हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आएँ। इन बच्चों को किसी भी तरह का स्किल जैसे कि क्राफ्ट, आर्ट, म्यूज़िक या कोई भी चीज़ हो जो आपको लगता है आप इन्हें सिखाना चाहते हैं, आप आएँ और इनको ज़रूर सिखाएं। इनकी इमोशनल या फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप सिटी नीड्स प्लेटफॉर्म पे जाकर इन बच्चों की पढ़ाई के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन द्वारा भी मदद कर सकते हैं। आइए इकट्ठे मिलकर इन बच्चों के भविष्य को और सुंदर बनाते हैं। Now these children otherwise belong to slums and now they are studying in a smart classroom. So how it was done? It was done through crowdfunding platform. Next. Now this is a child who was again badly suffering from pneumonia, orphan, no parents, no brother, no sisters. And she was taken to civil hospital, jahan pe around 30,000 rupees was gathered for her treatment. But unfortunately, she couldn't survive the disease. But still, we tried our level best. Next. This is another case जहां पे बच्चे का कार्डियक सर्जरी होना था। इतना छोटा सा बच्चा है 5 साल का। कार्डियक सर्जरी के लिए we raised funds. I think this was in Apollo Hospital, नहीं SPS Hospital, and the child got the treatment there done. Otherwise, they would have never been able to afford that. Next. Deepak with critical care. This child was, 9,000 के इंजेक्शन लगते थे इस बच्चे को, and he was on a ventilator. So through the platform, we could arrange for 5 injections, and 26,000 was given to the hospital. Next. बहुत सारे बच्चे ऐसे केसेस आते हैं खासतौर पे कोविड में जिनके पेरेंट्स जो हैं फीस नहीं दे पाते उनके स्कूल की, तो they approach us and we try to raise funds for them and pay for the school fee also. Next. Now this is a small child जो कि again एक laborer के यहाँ पे उसकी बेटी है, and she had a permanent disability of hearing and the machine cost is 70,000 rupees, which was impossible for them to buy. So this was again, the funds were raised on the City Needs platform and the child could get a new machine and she is now able to hear properly. Next. बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे प्री मैच्योर डिलीवरीज होती है, जहां पे सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. देयर ICU इज रिक्वायर्ड फॉर द चाइल्ड. बच्चों को इंटेंसिव केयर यूनिट में रखना पड़ता है. वहां पे भी जो लेबरर्स हैं वो अपने ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज द कॉस्ट इज टू हाई. 55,000 फॉर अ लेबर फैमिली is very, very, very difficult. So such cases are also reported to us through the NGOs. We go to the hospital, we verify the case, and then we meet the doctors, and then we raise the funds for them. Next. This is another similar case. These are all the success stories where the patients have gone back home successfully, or the fee has been paid, or the school has been set up, because ultimately things will work out with funds only. Next. Now, this was a case where a thalassemia patient had to go through a bone marrow treatment. Around 13 lakh rupees was required, जिसमें fundraising की गई. So there are n number of examples which I'm trying to share here. The basic concept is that the verification is done by the partner NGO, and we only help them to connect them to respective donors, and the donor can then go to the hospital or the school or the slum or whichever place जहाँ पे वो requirement होती है, and they can help as the case may be. So this is it for the day, and now I'll be sharing the assignment. इससे पहले आप सबको unmute कर दीजिए, and if there are any queries, I would like to address them. So if there are any queries, please raise your hands
and we can address them one by one, and then after that I'll share the assignment. सर कोर्स की क्या ड्यूरेशन होगी एक कोर्स की? मतलब This is 8 sessions है इसमें राजन, 2 hours each every Saturday Sunday, जिसके subjects already आपको बताए गए हैं, दोबारा हम share भी कर लेंगे. So 1.5 hours to 2 hours every day, but every weekend is the duration of the course. Any other questions, please? Okay. If you have any questions later on also, आप group में लिख सकते हैं. We'll try to address them, report them as fast as possible. Now let me tell you the assignment of the day. आपने ये पूरा 1.5 घंटे का सेशन देखा, आपने सिटी नीड्स के बारे में जाना, कुछ ना कुछ चीज ऐसी जरूर होगी जो आपको क्लिक करी. बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने शेयर की. वी जस्ट वांट, ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूं यहाँ पे, मैं ग्रुप में भी डालूंगा, इसको कॉपी कर लीजिए. हैव यू सीन द लिंक? इसको कॉपी कर लीजिए और इस पर क्लिक कीजिए. Now what you need to do is, अभी क्लिक मत करना, अभी सुन लो मेरी बात. What you need to do, listen carefully. There are 60 students in this. I want to see कि कितनों ने असाइनमेंट ये किया. आपने इसके नीचे सिर्फ एक ये कमेंट करना है कि आपको पिछले 1.5 घंटे में से सबसे अच्छी एक्टिविटी या सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन या सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या हुआ. Whatever you feel like. Now your assignment starts as a content writer. आप रिपोर्टर हो, so आपने एक प्रोग्राम देखा. You have to report the program on the social media platform. Now what you need to do is first put this video on your social media. Put this video का link on your social media. उसके बाद आप इस लिंक पे क्लिक करके नीचे एक कमेंट करेंगे. Now let me show you how it works. I'm clicking here. It will open up like this, and I can play the video. Sir, now here I have to comment. Sir, please. Sorry. Sir, screen share कर दो. We are unable to see, sir, कि क्या. Okay. Yes. दिख रही आप? Sir, now it is visible. अच्छा, अब साउंड रह गई आप. ਸਿਟੀ ਨੀਡਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਟੀ ਨੀਡਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. cityneeds.info ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਾਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਐਂਟਰ ਕਰੋ. ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਟੀ ਨੀਡਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਿਟੀ ਨੀਡਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ. ਬਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਂਟਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੋ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਟੀ ਨੀਡਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So this is the video जो हमने देखा, पिछले 1.5 घंटे में समझा, उसकी समरी है इस वीडियो में. आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वीडियो. सोशल मीडिया ओपन होगा, वहां पे आपने एक छोटा सा 50 to 60 वर्ड्स का एक स्टोरी लिखना है. योर असाइनमेंट्स, योर रिपोर्टर प्रोग्राम स्टार्ट्स टुडे. आपने जो भी देखा उसको आपने रिपोर्ट करना है 50 वर्ड्स में, बट
You have to write कि आपको सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस इसमें से क्या हुआ, एक चीज लिखनी है. डोंट राइट अ डिटेल स्टोरी, कोई नहीं पढ़ेगा फिर उसको. एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि उसको आप शेयर करेंगे, मैक्सिमम लोगों से शेयर करेंगे. टोटल पोस्ट जितने लोगों को शेयर होगी, नाउ दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. ये वीडियो यहां से जितने लोगों को भी शेयर होगी, हम उतने लोगों को फ्री में खाना खिलाएंगे. So that means just by sharing this video, you are going to feed one person. So this means without money also you can help people. There is a NGO called Neki Ki Rasoi at Kill Road. So they serve food to patients and their families in all the charitable hospitals every day. So the number of shares, कल हम calculate करेंगे कि हमारी main video कितने जगह पे शेयर हुई. जितने शेयर्स हुई उतने लोगों को हम मंडे को, कमिंग मंडे को आपकी तरफ से we will serve them free food. So that is the assignment. So without even spending a penny, you will be helping the community. So I hope you are clear with the assignment. मैं ये वीडियो दोबारा ग्रुप में. सर जैसे हमारे पास सर कई बार सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होता, तो हम अपने मदर फादर के सोशल मीडिया अकाउंट से कमेंट कर सकते हैं नीचे. कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हमने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखने हैं. ओके ओके सर, थैंक यू. मेन वीडियो, मेन जो पोस्ट है उसमें टोटल कल कितने शेयर्स हुए, उतने लोगों को हम मंडे का जो लंच है वो हम अपनी तरफ से स्पॉन्सर करेंगे. So your help starts now, and your reporter program also. दो चीजें करनी है आपने. One, you have to write a small 50-word story. नोट लिखना है आपने. सर शेयर सिर्फ फेसबुक से करना है. यस. और किससे करेंगे? इंस्टाग्राम से करेंगे आप. Then I think this video, Baljinder ji, you need to post it on Instagram also. Okay sir. Yes, either Facebook or Instagram से आप इसको share कीजिए. But make sure you comment also. You will be eligible only if you comment. एक आपने आज का experience लिखना है as a comment, and then you share. Total number of shares को उतने लोगों को हम Monday को afternoon में lunch sponsor करेंगे. Not to you, but the people who are needy. Okay. Now, if there are any questions, you can put in the group, and I'll try to address them personally. Hope you enjoyed the session, and if yes sir, it was a wonderful session, please give me a yes, we'll share the video on Instagram and also share it in the group. So hope you all enjoyed and learned few new things also, but I would like to know that what are the new things that you learned. So get ready and start your assignment. Get back to you tomorrow at 4 p.m. Same link, same place. Okay, Goodbye. sir. Thank you, sir. Have a nice day, sir. Have a nice day. Bye-bye. Bye-bye, sir.